हमने बताया सूर्य का प्रकाश भगवान के ऊपर पड़ने वाला है, हर रामनवमी के दिन पड़ने वाला ऐसा मुहूर्त, क्योंकि हमारे यहाँ मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व बोला गया है। अगर कोई विशेष मुहूर्त में हम जब कार्य करते हैं वो हमको फल देने वाला होता है। देखिए, अभिजीत मुहूर्त है जो कि जीत की जो है शुरुआत जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है, और बेहद महत्वपूर्ण ये मुहूर्त हो जाता है। प्रखर जी बताएं। जी, हमारे साथ शैलेंद्र भी मौजूद है। शैलेंद्र, आप जब मंदिर तक पहुंचे होंगे तो आप अयोध्या से गुजरे होंगे, अयोध्या की गलियों से, सड़कों से गुजरे होंगे। किस तरह का माहौल है, किस तरह के राम भक्तों का उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है, जरा बताएं। देखिए एक पूरी तरह से भक्त में डूबी पूरी अयोध्या नजर आ रही है। आप जब रामपथ से, हनुमानगढ़ी से गुजरे लता चौक होते हुए, तो दरअसल चारों तरफ भक्तों का उत्साह दिखाई देता है, और ये उत्साह राम मंदिर परिसर के अंदर भी। आप देखिए इस वक्त जिन्हें आमंत्रित किया गया है भक्तगणों को, संतों को, पूज्य संतों को, वो यहाँ पर आप देखें गीता परिवार की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं। आप लोग आज यहाँ आमंत्रित किए गए हैं, क्या भाव आ रहा है जब हम देखें कि भव्य राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? इतने वर्षों बाद, शताब्दियों बाद ये मौका आया। ये तो आज बहुत खुशी की मौका है और बहुत सौभाग्य की मौका है कि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये 500 साल का जो कोशिश किया गया, 500 साल का जो परिश्रमिक आज वो पूरा होने जा रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, और आप सबको भी कहते हैं कि आप लोग भी राम नाम जप कीजिए, घर में दिया जलाए, मंदिर में दिया जलाए, और राम जी का परम भक्त बन जाए। तो बिल्कुल इस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी से अपील भी की जा रही है, और हम जानते हैं कि एक दीपावली जैसा माहौल या उससे भी बढ़कर हम देख रहे हैं न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में प्रखर, और यहाँ पर जो संत आए हुए हैं उनके मनोभावों को समझा जा सकता है, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है उसे महसूस किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर न केवल इस राम मंदिर परिसर में बल्कि पूरी अयोध्या राममय है, भक्ति में डूबी हुई है, अलौकिक है, अद्भुत है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, आप जब गर्भगृह की बात करेंगे, आपने कहा कि अयोध्या दिव्य है, नव्य है, अलौकिक है, शाश्वत है, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और आज जिस तरह का माहौल है वहां पर आपने बताया, सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपसे समझना चाहेंगे गर्भगृह में जो मूर्ति रामलला विग्रह की है उसके प्रति कितना आकर्षण लोगों में दिख रहा है, क्योंकि वो मूर्ति बाल रूप को प्रदर्शित करती है और भगवान का बाल रूप मनमोहक है, मधुर है, सुंदर है। देखिए निखिल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। हमने तमाम लोग मीडिया से ये पूछते नजर आए, पत्रकारों से ये पूछते नजर आए कि कब से उन्हें मौका मिलेगा, कब वो दर्शन कर सकेंगे, क्या आज ही शाम को दर्शन होगा? और हम जानते हैं कि बहुत उत्सुकता है। अयोध्या में जो भी हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में लोग आए, इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले, वो भी ये कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द अयोध्या आएंगे, दर्शन करेंगे, और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां पर तमाम जो संत महात्मा है, जो आमंत्रित लोग हैं, वो बैठेंगे, उसके ठीक हम ये कह सकते हैं कि हम पीछे खड़े हुए हैं, और ठीक सामने यह भव्य राम मंदिर का मुख्य जो द्वार है, वो जो मुख्य गेट है, जहाँ पर आप देखें कि तमाम लोगों की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ से सीधे नजर आ रहा होगा, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जब आज का दिन हम देख रहे हैं कि जिसका इंतजार लोगों को शताब्दी
तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा मंदिर। ले ले राम का नाम, ले ले राम का नाम, भज ले राम का नाम, जप ले राम का नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अयोध्या दर्शन करने, अयोध्या दर्शन करने, राम की भक्ति से झोली भरने। प्राण प्रतिष्ठा राम की होगी, बन जा तू भी राम का जोगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैल तू सरयू में धोने, का मैल तू सरयू में धोने। तर जाए वो राम जो बोले, राम कहानी सबको पता मेरे राम है भोले। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सारे संकट कट जाएंगे, सारे संकट कट जाएंगे। बादल कष्ट के छट जाएंगे। दिल से पुकारो राम का नाम, राम ही आए तेरे काम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो समाचार सुनी लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाए। शब्द नहीं है कि मैं उस भाव का वर्णन कर सकूं। जी ठीक है, हमारे साथ अशोक पांडे जी भी हैं और अयोध्या में लंबे समय से निवास करते रहे हैं। अशोक जी, जिस तरह की स्थितियां अभी अयोध्या में नजर आ रही हैं, जो खूबसूरती नजर आ रही है, जो सुंदरता नजर आ रही है, जो भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है, क्या अयोध्या को इसको बहुत लंबे समय से इंतजार था? जी 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 500 वर्षों के बाद यह अवसर मिला हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम सब लोग शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे कि जो दिव्य और भव्य नव्य अयोध्या का निर्माण उन्होंने किया है। हम सब लोग तो लगता है स्वप्न लोक में पहुंच गए। इतना दिव्य नगर अयोध्या बना दिया है उन्होंने, तो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये तो त्रेता युग वाली अयोध्या दिखाई पड़ रही है।
जैसे मानो अलकापुरी ही इस धरा पर अवतरित हो गई हो। इतनी सुंदरता, इतनी स्थिरता और इतना खूबसूरत अयोध्या का वातावरण है कि हम लोग धन्य हो जा रहे हैं। और भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने मंदिर में प्रवेश करने के लिए आज तत्पर हो रहे हैं और हम सब लोग खूब आनंदोत्सव मना रहे हैं क्योंकि हम गुरुकुल से संबंधित हैं। भैया एक लाल मिर्च का पैकेट देना। एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। भैया लाल मिर्च का पैकेट चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। अजीब है भैया, लाल मिर्च का पैकेट मांग रही हो ना मैं। हाँ मैडम, मैं वही मंगवा रहा हूँ। हरी एक मिर्च का पैकेट दियो। भैया सुनाई नहीं देता आपको? लाल मिर्च का पैकेट चाहिए। प्रमुदित हैं, मुदित हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर राम नहीं रहमान रहेंगे, राम नहीं रहमान। जो 500 साल के बाद भगवान प्रभु राम उस मंदिर में विराजमान हुए हैं और उस भाव के और उस दृश्य के और उस छटा के हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। कभी ये कल्पना नहीं की। इस मंदिर के लिए कितने लोगों ने गोलियां खाई। कभी एक समय था कि सरजू जी की धारा रक्त वर्ण की हो गई, वो भी एक समय था। आज के 4 साल 5 साल पहले ये अयोध्या पीरान उजड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज अयोध्या को देख करके हम लोग यही अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग तो देखे नहीं है, लेकिन आज हमको लग रहा है कि मानो अमरावती पुरी ही अयोध्या में आकर के विराजमान हो गई हो, क्योंकि हमारे प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ पर आज अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि अयोध्या की तुलना जो है वो अमरावती से की गई है, कि अमरावती की तरह राजा दशरथ और राजा राम के समय अयोध्या हुआ करती थी, और आपने आज वही एक बार तुलना जो है आधुनिक अयोध्या की की। या देख लो, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने है जा रही प्रखर। और निश्चित तौर पर आज जब ये कह रहे हैं कि अयोध्या भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, शाश्वत है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, स्वयं ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो माहौल, वो समा कैसा होगा ये समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारा ये प्रसारण लाइव जारी रहेगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। The course is clear. Let's do this. Sharp corners ahead. Brake hard. No sweat. Unstoppable power, unbeatable precision. Introducing the TVS Apache RTR 164V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. रुड़की उत्तराखंड निवासी राजू पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, the taste of India। तूने ही मिलके करार जगाया, the taste of India। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है। सीता जी जब यह सुन पाई, रंग महल से नीचे आई।
चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो। मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो। मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो। राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी। अवधपुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी। श्रृंगवेरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए। केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ। लाया एक कठोता भारी, चरण कमल धोए सुखकारी। उतराई में मुदरी दीनी, केवट ने यह विनती कीनी। तुम
हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। हो भारद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए। चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब कई की कुटिलाई। चरण पादुका तुम ले लीजो, दर्शन करके पूजा कीजो। आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया। जन स्थान आए रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटाई। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग मारिच संग धाए। रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया।
अद्भुत दृश्य हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर कि लगातार ये कोशिश है कि राम जन्मभूमि तक पहुंचा जाए, लेकिन चूंकि सेलेक्टेड लोगों को ही आमंत्रण है, इसलिए लोग यहाँ दोनों तरफ खड़े होकर के राम का अभिनंदन करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए, देखिए हाथों में झंडे लिए हुए लोग नारे बुलंद कर रहे हैं। जी दिखाने की कोशिश है। आप कहाँ से आए हैं चल के? हम लोग सर बिहार पटना से हैं। जी जी। क्या लगता है कि रामलला आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं? जी जी, पहले खुशी की बात है, अपार हर्ष के साथ सूचना कर पड़ा है कि 500 साल के बाद जो श्री राम जी का रामलला यहाँ पे दर्शन का आज मूर्ति का वो आज क्या बोलते हैं, एक मिनट, बस उसी क्षण को हम लोग ऐतिहासिक क्षण में गवाह होने के लिए हम लोग इस अयोध्या के पावन नगरी में घूमने के लिए आए हैं। देखिए अयोध्या की पावन नगरी में ये घूमने के लिए आए हैं और ये जो ऐतिहासिक क्षण है, इस क्षण को जीने के लिए ये पहुंचे हैं। एक तरफ देखिए ये नजारा कि मयूर का नृत्य जो है वो किया जा रहा है। भगवान राम के स्वागत में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए, और गाने भी बजाए जा रहे हैं निखिल कि अवध में राम आए हैं। और आप देखिए कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी हैं, रैफ के जवान और तमाम जो लोग हैं, और सड़कें आप जहां तक नजर जाती हो बहुत ही खूबसूरती का आलम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बखूबी देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर तो राम अयोध्या के कड़ कड़ में है, जो कहते हैं कि आज श्री राम का नाम, आज श्री राम की महिमा और अयोध्या नगरी, तो ये सब अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, नव्य है। इससे जुड़े हुए जो भी प्रसारण है वो लाइव हम आपको दूरदर्शन पर लाइव और एक्सक्लूसिव दूरदर्शन पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हनुमत आए चरण कमल में शीश नवाए, हेलो, मैं टेस्टिंग 1 2 3 4 हेलो।
क्षण का घर आया। हनुमान को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। ओ हनुमान उपवन में आए,
लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। On January 22nd, the world is witnessing a landmark moment in the civilizational resurgence of one of the oldest native cultures. Ram Mandir offers hope to indigenous cultures worldwide. हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। हो नृप घर जन्मे चार कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों की शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा
पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू अयोध्या अयोध्या हेलो मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाल भैया एक लाल मिर्च का पैकेट देना। एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। भैया लाल मिर्च का पैकेट चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। अजीब है भैया, लाल मिर्च का पैकेट मांग रही हूँ ना मैं। हाँ हाँ मैडम, मैं वही मंगवा रहा हूँ। हरी एक मिर्च का पैकेट दियो। भैया सुनाई नहीं देता आपको? लाल मिर्च का पैकेट चाहिए, हरी मिर्च का नहीं। मैडम उसका नाम हरी है, मैं बोल रहा हूँ हरी एक मिर्च का पैकेट दियो। तो ये मुझे कौन बताएगा? मुझे तो लगा बह रहे हो आप, सुनाई नहीं दे रहा आपको। और मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये कन्फेक्शनरी की दुकान है, सब्जी की दुकान थोड़ी है यहाँ हरी मिर्च मिलेगी, यहाँ लाल मिर्च ही मिलेगी। अरे भैया लाल मिर्च का पैकेट। आप तो कहते हैं इनका नाम हरी है, ये आपको हरी बोल रहे हैं। पागल समझा मुझे? मैडम इनका नाम भी हरी है, मेरा नाम भी हरी है, और हमारी दुकान पे एक लड़का और काम करता है, उसका नाम भी हरी है। हम 3 लोग हैं, तीनों का नाम हरी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 1 सेकंड रुको। हरी हरी क्या? क्यों लेकिन? हमने ना मैडम इंस्टाग्राम पे प्रेमानंद जी की रील देखी थी। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्ति नाम जप में है। 24 घंटे इंसान को नाम जप करना चाहिए। तो हमने कहा हम तो दुकान पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम जप कैसे करें? तो इसीलिए हमने एक दूसरे को हरी हरी नाम से बुलाना चालू कर दिया। सही है हरी भैया, ये लीजिए आपके पैसे। राधे राधे। राधे। अरे भैया क्या बकवास लगा रखी है ये? देखिए जी, अपनी दुकान में हम लड़कों को छोटू, चंदू, ओए इधरा इन नामों से बुलाने से अच्छा तो ये है ना कि हम भगवान का नाम लेके बुलाएं अपनी दुकान में लड़कों को। भैया बात तो सही है आपकी, काम करने के साथ साथ आप भगवान का नाम भी ले लोगे। देखो जी, पहले के जमाने में क्या होता था, पेरेंट्स ना अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, ताकि जब भी वो अपने बच्चे को याद करेंगे तो साथ साथ भगवान को भी याद करेंगे। जैसे कि एक दिन में 10 बार एक माँ ने अपने बच्चे को बुलाया राम नाम से, तो 10 बार उसने भगवान को भी याद कर लिया ना साथ साथ।
पता है बचपन में मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम राधा क्यों रख दिया, लेकिन अब जब मुझे कोई भी बुलाता है ना राधा के नाम से तो मुझे बहुत अच्छा मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, I request all the students to kindly be seated. हरी भैया, हाँ जी, 1 किलो चावल देना। आप भी मुझे हरी नाम से बुलाने लग गई। अरे 1 किलो चावल दियो। भैया भगवान का नाम सिर्फ आपको थोड़ी लेना है, हमें भी लेना है, इसलिए आपको हरी बुला रही हूँ। और तो और मैंने आपका आइडिया चुरा लिया है, मेरा पार्लर है, वहाँ पे एक लड़की काम करती है, उसको मैं लक्ष्मी नाम से बुलाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए चावल। ये लीजिए भैया। राधे राधे। राधे। A very good morning to one and all present here. All the students kindly be seated. Please take your seats. The student volunteers can guide them. I request all the student volunteers to help the students sit down. राम नहीं रहमान रहेंगे, राम नहीं रहमान रहेंगे, कह मले छियों दौड़े थे, रजपूती मुंडों पर पग धर देव विग्रह सब तोड़े थे, धर्म ध्वजाएं जली जला यह नगर अयोध्या रो रो कर, सदियों से सिसकी भरती सरयू बह रही मौन होकर, राजा राम हुए निर्वासित हत आहत सा जनमानस, कैसे करते वे भविष्य से आंख मिलाने का साहस, गैरों ने लूटा सो लूटा, गैरों ने लूटा सो लूटा, अपनों ने भी पूछ लिया, राम कौन है क्या प्रमाण है, कैसा मंदिर बोल दिया, क्या नहीं देखा सुना वध, तू सचमुच हिम्मत वाली है, आज देख तू वैभव अपना कितनी कीमत वाली है, राम लला फिर से लौटे हैं, लौटा तेरा विगत महान, भारत का गौरव लौटा है हर भारतवासी का मान, जगमग सरयू घाट सुनहरे मुखरित कनक भवन तेरे, देख प्रफुल्लित गलियां तेरी भक्तों के लगते डेरे, इतिहासों के काले पन्ने देख मिटेंगे तेरे हाथ, उन्नत मस्तक से बोलेगा सारा भारत जय रघुनाथ, घर घर दीप जलेंगे, सारे महिमा तेरी गाएंगे, मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या दर्शन करने आएंगे, आज हुआ प्रण पूरा सबका, राम लला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर यहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर यहीं बनाएंगे। जय श्री राम। Dear students, kindly take your seats. I request all the student volunteers to please guide the students to take their seats. तमस की छाती जैसे सूर्य किरण खिल जाते हैं, अवधपुरी के मंदिर में श्री राम प्रभु फिर आते हैं। चीर तमस की छाती जैसे सूर्य किरण खिल जाते हैं, अवधपुरी के मंदिर में श्री राम प्रभु फिर आते हैं। नगर बस्तियों गलियों ने ये गूंज उठाई, हाथ उठाकर करो गर्जना लेके एक ही नाम, Students, all the students who are standing at the back, I request everyone to kindly take your seats, please.
जिनकी आंख के हैं वो तारे, मंदिर अवधपुरी में रच कर रामलला को सभी पुकारे। Good morning, dear all. Please take your seats, please. All the faculty members are requested to take their seats, please. I request everyone to kindly settle down. I request all the students to take the front seats, please. I request all the students sitting at the back to take the front seats, please. उसे सच्चे मन से मिलके गाएंगे, हाथ उठा के करो गर्जना लेके एक ही नाम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। बलिदानों को मन में रख कर सार्थकता से हर्षित हो गए, आसमान में भविष्य उभरे बजरंगी से उड़ान ले गए, कोटि कंठ से पूर्ण भक्ति। Good morning, everyone. I request all the students to settle down, please. The student volunteers are requested to help the students and guide them to take their seats, please. I request all the faculty members to take their seats, please. Everyone is requested to keep their phones on silent mode, please. Kindly ensure that your phone is on silent mode. Thank you. हाथ उठा कर करो गर्जना लेके एक ही नाम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय Good morning, dear all. Please kindly maintain the decorum of the auditorium. I request all the students and faculty members to keep their phones on silent mode, please. I request all the faculty members to please take their seats. The student volunteers, please guide the students to take their seats. हमारा राम सिया का, वीर लखन का, भरत भाई का, राम कथा आदर्श श्रेष्ठ से भविष्य उभरे भरत भूमि का, एक राह पर साथ साथ हम मिलके गाएंगे, हाथ उठा के करो गर्जना लेके एक ही नाम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम,
I request everyone to kindly take their seats. Everyone is requested to please put their phones on silent mode, please. राम नहीं रहमान रहेंगे Please ensure that your phone is on silent mode. दौड़े थे रजपूती मुंडों पर पग धर देव विग्रह सब तोड़े थे धर्म ध्वजाएं जली जला यह नगर अयोध्या रो रो कर सदियों से सिसकी भरती सरयू बह रही मौन होकर राजा राम हुए निर्वासित हत आहत सा जनमानस कैसे करते वे भविष्य से आंख मिलाने का साहस गैरों ने लूटा सो लूटा गैरों ने लूटा सो लूटा अपनों ने भी पूछ लिया राम कौन है क्या प्रमाण है कैसा मंदिर बोल दिया क्या नहीं देखा सुना वध तू सचमुच हिम्मत वाली है आज देख तू वैभव अपना कितनी कीमत वाली है राम A very good morning to one and all present here. I request all the students to kindly take their seats, please. Please ensure that your phone is on silent mode. I also request the student volunteers to take their seats, please. The student volunteers, kindly take your seats, please. The event will commence shortly. I reiterate, student volunteers, please take your seats. Dear student volunteers, I request everyone to please take their seats, please. I request all the faculty members to please take their seats. The event will begin shortly. You're requested to kindly maintain the decorum of the auditorium.
गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरे. Dear all, a very warm good morning to one and all present here. I request all the faculty members at the back, please take their seats. I request all the student volunteers also to please take their seats, please. The event will commence shortly. Thank you. हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की. हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की. हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की. ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की. ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की. ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू. I request all the students at the back to please take their seats. Student volunteers at the back, please guide the students to take their seats, please. अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम. Good morning, everyone. Kindly take your seats. The guest is arriving in 2 minutes. I request all the students to kindly put their phones on silent mode, please. I request everyone to kindly maintain the decorum of the auditorium. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे. राम आएंगे आएंगे राम आएंगे. राम आएंगे आएंगे राम. I request all the faculty members at the back to please kindly take your seats, please. The guest is arriving shortly. Please kindly maintain silence. के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे. राम आएंगे तो अंगना सजा. I request all the students at the back to kindly take your seats, please. दिवाली में Student volunteers, please guide them to take their seats, please. आएंगे तो अंगना सजाऊंगी. दीप The guest is arriving.
arriving shortly. Kindly maintain silence. दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. The guest has arrived. Kindly stand. सारे बोलो, सियावर रामचंद्र की, दशरथ पुत्र राम की, पवन पुत्र हनुमान की. झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी. श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. I request everyone to maintain silence, please. मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी. हो मैं तो I request all the students to kindly be seated. नमस्कार. सभी उपस्थित वरिष्ठ जनों को सुप्रभात और सादर प्रणाम. On behalf of Indus University, a warm welcome to all of you on this auspicious occasion of Ram Mandir Ayodhya Pran Pratishtha Day. And on this occasion, we are delighted to have Shri Praveen Mohanji, who will be with us, and he will be delivering an intriguing expert talk on science behind ancient temples. जैसे कि हमारे देश की परंपरा है कि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर की वंदना से करते हैं. May I request the dignitaries to please come forward and light the auspicious lamp. I request everyone to kindly rise for the Saraswati Vandana. Thank you to all the dignitaries. Kindly take your seats, please. Before we begin with the session, I would like to make a small announcement that faculty members or students who wish to ask questions during the question answers round are requested to write their questions on a chit and hand it over to Miloni ma'am. Thank you. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज के इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्टोरियन, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट
रिसर्च स्कॉलर एंड यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर श्री प्रवीण मोहन जी हमारे साथ है। आपका इंडस विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे माननीय प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट डॉक्टर नागेश भंडारी और डॉक्टर ऋतु भंडारी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे आदरणीय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वेदव्यास द्विवेदी, रजिस्ट्रार डॉक्टर आर.के. सिंह, डेप्यूटी रजिस्ट्रार डॉक्टर सुकेतु जानी, डीन ऑफ एविएशन एंड डायरेक्टर ऑफ WIIA मिस राधिका भंडारी, एडवाइजर टू इंडियस डिजाइन स्कूल डॉक्टर नैना भंडारी, सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, DGMs, HODs, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिन स्टाफ और स्टूडेंट्स का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। Dear all, at the outset, it is with immense pride and joy that we announce that yesterday at Indus University campus, our talented students of Indus Design School made an outstanding achievement by successfully attempting to set a world record for the largest cyanotype print using an impressive 306 square meter canvas. This remarkable feat is a testament of creativity, dedication, and the collaborative spirit of the Indus Design School community. We extend our heartfelt congratulations to all the students involved in this ambitious project. We would like to express our gratitude to Dr. Naina Bhandari for her visionary leadership and guidance throughout the project. Additionally, a special acknowledgement goes to Ms. Aditi for her exceptional execution and to Mr. Prabodh Mishra, Head of Design at Indus Design School, for overseeing and supporting this groundbreaking initiative. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रितेंद्र शर्मा, डीन ऑफ सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज को we will have a small clip. We'll be seeing a small clip of the world is the world record we landmark created yesterday moment in the civilizational resurgence of one of the oldest native cultures. Ram Mandir offers hope to indigenous cultures worldwide that if you work hard, conscientiously, and believe in doing your karma, decolonization will be a reality. On a dark night in Treta Yuga, the people of Ayodhya lit up diyas for Prabhu Sri Ram to come back to his rightful place. Using the blue hue of cyanotype printing symbolizing the night, this world record, created by the students of Indus Design School, pays homage to the return of the deity of Prabhu Sri Ram to his rightful place. On the auspicious eve of Pran Pratishtha ceremony of Ram Mandir at Ayodhya, we have been blessed with an opportunity to break the world record for the largest cyanotype print ever made by anybody, and we are very happy today to unveil it in front of you. Cyanotype printing is a process where photosensitive chemicals are exposed to sunlight, creating a unique chhap or a shadow or an impression onto the canvas. And this canvas that we have made currently boasts an impressive 170 meters and in length, and the total square meter is 306 square meters. We have broken the previous record by approximately 30 square meters, and we have done it with the very talented students of Indus Design School. These students have worked for the past 4 days without sleeping, constantly working very, very hard, and the outputs have amazed us all. The idea for this artwork started with discussing how we would incorporate the welcoming of Lord Ram to Ayodhya using our art and our expression.
And after many iterations of art, we decided that we would represent the night on which God Ram came back to Ayodhya in the middle of the night, and everybody lit diyas to show him the path back to Ayodhya. To do that, we decided to settle on a technique which is simultaneous print. And originally the idea was never to create the largest, but as people started connecting with us and as we started exploring more and more opportunities and we started brainstorming how we could make it bigger, better, we ended up creating something that nobody else has ever done. And we are going to show you the process of how it's done now. First and foremost, we washed the entire 170 meters of cloth, and after washing that, we had to dry it across such a large length so that the dye is absorbed. Amazing. Kudos to Indus Design School students. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर रितेंद्र शर्मा, डीन ऑफ सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज को आमंत्रित करती हूं कि वे मंच पर आए और श्री प्रवीण मोहन जी के बारे में कुछ शब्द कहे। सर। Namaste everyone, and Jai Shri Ram. And one more saying that goes along with it is Dharm ki aur adharm ka. Look, this we have been saying for thousands of years, that it goes together. That if you would like to establish dharma, you have to fight against and demolish and destroy adharma. So on one hand, you need to understand deeply what dharma is, but on the other hand, we need to be ever vigilant about what adharma is. Once we have forgotten what adharma is, it would be very difficult for us to re-establish and restore dharmic sanctity in this country. And I think because the whole nation is immersing in this spiritual and civilizational experience, they cannot be, it cannot be expressed in words. It cannot be expressed in language what we are witnessing today. This is a historic moment by any definition, by any scale. This is historic in many sense. Of course, you see the picture here that 1528 to 2024, but journey goes even before that, because that was the second destruction of Ram temple. The first destruction happened in 11th century itself. So it's reclamation of sacred space after 1000 years. That we need to etch in our memory forever. Because we are the first civilization on this planet, dharmic, pagan, spiritual civilization, that could reclaim its sacred indigenous space from, without naming these forces, the three dark forces which managed to destroy sacred spaces everywhere on this planet in the last 2000 years. So Ayodhya reclamation or Ram Janam Bhoomi, restoration of temple, is not only important for India. Yes, it is important for Hindus. Yes, it is important for India. But it is important for all pagan, dharmic, spiritual civilization in the world, because it gives them confidence to all of them that their sacred places can be brought back if they will just keep in mind that to restore dharma, we have to destroy adharmic forces. We need to reclaim sacred spaces across India. So remember, this historic moment is very special in many sense. And the struggle that we had gone through
we cannot imagine the sacrifices generation after generation to keep this memory alive, that this sacred spot is there and we will keep worshipping even if it is destroyed by alien forces. Remember, this memory was itself important because only on that basis of that memory and that tradition, court allowed us to build that back. It was not about we could prove that Ram was born there or Ayodhya was there and all those things. We worshipped there for thousands of years without having our temple there, just having a space there and all these things in our memory. So even if your hardcore structure goes out, your memory, your tradition, your devotion to your gods will play important role in that reclamation. So historically, that's why it's very important. And for future respect, I think this is just a good beginning, a very important beginning, because Ram Janam Bhoomi temple reclamation is the first thing that we have to do. We are waiting for Krishna Janam Bhoomi, we are waiting for Shiv Bhoomi in Ukashi, and we are waiting for thousands of such kind of bhumis spreading across states or country. And I go for more for that. We have temples, of course Praveen Mohanji will be talking about that, in Indonesia, Cambodia, all over Southeast Asia, and we will also help Australian natives, American natives, will also help Middle Eastern natives to reclaim their sacred sites. So I think when India is rising economically, it's important to acknowledge that we are rising with our cultures and values intact, without diluting them, without compromising on them. So it's a very auspicious moment for all of us. One thing I'll repeat here again, that for any civilization to sustain itself, to keep itself alive, to keep itself intact, it has to be ever vigilant. The destruction that happened before independence, of course we know it very well, because they were alien forces and we could recognize that they are our enemies. So we kept that memory alive. But we need to be ever vigilant about the forces that work within society also. Because they managed to capture our academia, they managed to capture our media, they managed to capture our policy making, polity. And that forces are deep, subtle and more pervasive in nature. And that requires vigilance not only from border forces, from our military, that requires vigilance from each one of us. When each one of us will be awakened to our civilizational value, then only we can say that we can bring Ram Rajya back. So let's say the Ram has come, now we need to bring back Ram Rajya, and we not stop till we achieve our goal of Ram Raj, which is equivalent to what we call in popular term Hindu Rashtra, or in whatever term you like it. But for traditionally we have called it Ram Rajya, right? And this is important, let me tell you, not in the terms of rhetorics and slogan. This is important because when world is heading towards ecological collapse, towards societal collapse, towards disharmony, India can show a way to other countries also in 21st century, only if we know what Ram means and what Ram Rajya means. So let's deeply understand from today what does that mean and how we can restore that back. Okay? And it's a great coincidence that Praveen Mohanji is with us today. This is coincidence because when we started sending invitation to Praveen Mohanji, we were not sure that this is going to happen on 22nd January. And now today he is with us, Ram Janam Bhoomi Pran Pratishtha Samaro is going on. What could be more auspicious coincidence than this? Because to understand science behind ancient temple, we will understand multi-dimensional aspect of our civilization. Remember, temple was at the core, is at the core and will remain at the core of Hindu civilization. If you have taken temple out of its soul, its center, then that civilization will no longer remain Hindu civilization or Ram Rajya.
So, to understand that deeply, to understand the multi-dimensional perspective behind temple, we have with us, I'm going to give formal introduction of Praveen Mohanji, and then we'll invite, of course, Dr. Nagesh Bhandari ji to say a few words on him. So, Shri Praveen Mohanji is an internationally renowned researcher who focuses on ancient Hindu temples and the science behind Indian culture. Some of his groundbreaking discoveries include ancient sundials, secret tunnels, and entry symbols in temples. He has explored hundreds of Hindu temples in India and abroad, and has documented the carving found there. He has proved that the ancient Hindu temples were built with advanced technology. Through his research, he has shown that all the ancient temples have some hidden messages, and also demonstrated how we can decode the hidden codes in ancient carving. Shri Praveen Mohanji has dedicated his whole life to this cause. In his videos, he has shown how Taj Mahal and Qutub Minar are Hindu monuments. And I think YouTube is after publishing these videos, to ban them and to ban your YouTube channel also. So please watch it before it gets deleted from there. He is also working on government projects like building a temple museum in Ayodhya. He has YouTube channels in English as well as Indian languages like Hindi, Tamil and Telugu to spread knowledge about ancient India. He has more than 50 lakh followers on social media, and that's his power of spreading message on. So he is very influential, very powerful in terms of spreading message about our civilization. Shri Praveen Mohanji also runs a publication to translate all ancient Indian texts so that the whole world can understand the power of our Sanatan Dharma. So this is, of course, it's a big journey. His popular video is medium for, millions of seekers around the world who's getting educated about our temples. Before I invite him, I would like to invite Dr. Bhandari ji to say a few words about him. And he has been keenly following him and wanted him to invite for a long time. Dr. Bhandari, please. धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर नागेश भंडारी को से दर्शकों को संबोधित करने के लिए आग्रह करती हूँ। जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। आज आप सबको श्री राम दिवस पुण्य स्थापना की बधाइयाँ। आज अलौकिक दिवस है। श्री राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश आज राममय हो गया है। सभी से अनुरोध है कि इसको पूर्ण हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाएं। आज हमारे बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान श्री प्रवीण मोहन जी उपस्थित हैं, जो आज हमारे साथ प्राचीन भारतीय मंदिरों के बारे में संवाद करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि प्रवीण जी is a master in mechanical engineering and robotics, plus he is master in history. तो आप समझ सकते हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है। मंदिर हमारी आध्यात्मिक आस्था, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक व समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों जैसे शिक्षा, कला, संगीत, विभिन्न समारोह एवं व्यापारिक कार्य केंद्र होते हैं और रहे हैं। पुराने समय से मंदिर हमेशा शहर का केंद्र बिंदु होते थे। वह सारा विकास उसके चारों तरफ उसके आसपास ही हुआ करता था। मंदिर के संचय कोष से कई प्रकार की प्रवृत्तियों को सहयोग दिया जाता था, जैसे विद्यालय, धर्मशाला, चिकित्सालय इत्यादि। अयोध्या राम मंदिर भी उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र एवं विकास का केंद्र रहेगा। श्री प्रवीण मोहन जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वह कई वर्षों से देश व विदेश के हिंदू मंदिरों एवं उसकी कलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी कला परखने की दृष्टि बाज के समान तेज है। मतलब मैंने ये देखा है कि 1 इंच की भी मूर्ति होगी, उसमें भी वो विभिन्न भाव उसमें नोट कर लेते हैं, जैसे वो मूर्ति हंस रही है कि दुखी है या किस प्रकार के उसके भाव, वो सब उस 1 इंच की मूर्ति में भी देख लेते हैं। वो इतनी उनकी दृष्टि तेज है।
प्रवीण जी ने मंदिरों के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया है, उसमें किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया है, विभिन्न मूर्तियों को एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या उद्देश्य है, इत्यादि पर गहन चिंतन और अनुसंधान किया है। मंदिर में की गई नक्काशियों के द्वारा हम उस समय होने वाली गतिविधियों से, सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रयोग में ली गई तकनीक के बारे में समझ पाते हैं, जबकि उस समय में ली गई तकनीक आज के समय से बहुत आगे बढ़ी हुई थी। अब मैं श्री प्रवीण मोहन जी को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वह सभा को संबोधित कर मंदिर एवं उसके विज्ञान के बारे में हमें ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट डॉक्टर नागेश भंडारी जी को अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय महोदय श्री प्रवीण मोहन जी को अभिनंदन पौधा भेंट करें। That we have started to look into about the science behind ancient temples. Now, first of all, I want to question you. Somebody has... Check. I think I need your help. Is it okay? Yeah. First of all, I want to ask a simple question and say, why did we build these amazing temples? At face value, you may start thinking like, this is a weird question. Why do people build mosques? Why do people build churches? To pray God, right? To worship gods and to pray to God. So isn't that the same reason why we built these ancient Hindu temples? But if you start to research ancient Hindu temples, for example, if you go to Konark, there is a temple dedicated to the sun god, Surya, and you will see a sundial built about 850 years ago. This is a clock, this is an accurate clock, and if you just spend 5 minutes on it, you can tell the time accurately up to 1 minute. You can now say, okay, now the time is like 11 hours and 16 minutes. So you can be very accurate in telling us that this is the time.
right? So if it's all about the religion, why would they put a clock, an accurate clock, in an ancient temple? Now we have an even better temple, another bigger sun temple in Gujarat. This is in Modera. If you go on a specific date on June 21st, this is an astronomical event called the solstice. And if you go on this specific date, you will realize that the temple's shadow is not falling on the ground. Now, this may sound really weird to you. How is it possible that a temple's shadow is not falling on the ground? But if you go on this specific date, or on December 21st, another solstice day, the temple's shadow will not fall on the ground. And even your own shadow will not fall on the ground. Now, how is this possible, right? Because when they built the Sun Temple in Gujarat, they specifically went and found a line on the globe called the Tropic of Cancer. This is called Kark Rekha. Okay? So they specifically built the temple on that line so they could calculate the astronomical events. So you can see how advanced they were. They were not only just building temples for worship, they were incorporating the science with the religion. If you go to this Modera Sun Temple, you can take out your phone and then you can take the Compass app and you can put it in the entrance of the Modera Sun Temple. And you will be shocked because they have built the temple so accurately that it's precisely aligned with the north, east, southwest direction. It precisely points to the east-west direction, right? And there's no error. There is 0.000% error, which is nearly impossible to build. So you can see how they were able to kind of mix science and spirituality together and deliver it as a package. Another important part that you want to think about, why the temples were built. It was not built for one purpose, but several angles were given. How's my audio? Is it? Am I getting echo? But then if I go closer, then I think you have to tweak it. Check. Even closer? This is good? So most of the temples that are built today, they are built for one purpose, to worship the gods. But if you look at the temples in ancient times, they had separate spaces. For example, you would find something called a Natya Mandapa, which is basically a dancing hall. And then you would have a Kalyana Mandapa, mostly in South Indian temples. This was a wedding hall. And now when we read the inscriptions, we realize that we also have Adurashalas, which are basically functioning hospitals inside the temples. Now, and if you look at the carvings in the temples, you will find something really, really interesting. If you were a child, or when you were a child, when you were like 5 years old, when you went to the temples, you only noticed the animals. This is not a coincidence, because if you look at the vertical side of the temples were designed in a way to kind of engage you at your age level. The first 1 or 2 feet always had animals. And when you were a child, because you were so small, you could only look at that height. You will see animals like lions, and you see animals like elephants, but not just carvings of animals. You will see their behavior. You will see something crazy like a monkey riding on a goat. And this will be very interesting for you when you were a child, because even today monkeys do that. Monkeys will find a goat and they will start riding a goat. Now, ancient builders noticed all these behaviors of animals, and they carved them.
for you to get entertained about them. Because like 100 years ago, this was your Cartoon Network, this was your Animal Planet, so you could see all these carvings and enjoy them. And then at the next level, you can see carvings of dancing, of musical instruments, and then you can see carvings like boxing, you can see carvings of wrestling, and you can see carvings of games. This is good for the age group between 6 and 10. And then above this group, above this level, you will see more carvings. You will see carvings of war, administration, science. You will see more information like how to make knots. A lot of scientific information will be given in this level. And then there are more carvings. And then only after you become 25, like at the top level, you will start to see the gods. Because they were put in such a way so you can, it'll be engaging for you at your age group. So this is also something that you can see in these temples, right? So you can see that the temple is almost like a Wikipedia. You can basically find anything you're looking for. You can find information about astronomy. You can find information about musical instruments, for example. So you can see all this in ancient temples. Now, we also want to talk about how the temples were built. The standard theory that historians and archaeologists have put, now remember, this is the theory that came from British historians and British archaeologists who always put down the Indian system at a subpar level. So they always theorized that these people were using chisels and hammers and simple tools like pickaxes and spades. But if you go to a temple called Hoysaleswara temple in Karnataka, or if you go to Chennakeshwara temple in Karnataka, you will start to see pillars which can be created only with the help of rotating machines. These pillars will look like pots, basically. And archaeologists accept that yes, we cannot create such pillars with chisels and hammers. We need a rotating mechanism to create such pillars. Now, each pillar weighs about 20 to 40 tons. So imagine how big of a lathe mechanism they must have used 1,000 years ago to create these pillars. So we know that they were using some type of advanced devices, and over the period of many centuries, we have lost them. And if you go to another temple called the Ramappa temple, this is in Telangana, if you go to a temple called Ramappa temple, they have taken the bricks out of the temples, and if you put these bricks in water, it'll float, the bricks will float. Now these are not floating stones like pumice or pumice, these are actually artificial bricks that were created 800 years ago. Today we use the same technology. We use AAC, or autoclaved aerated concrete. So in countries like Japan, which are known to have earthquakes, they make bricks which are extremely lightweight. And why, right? Because if there is an earthquake, there is very less destruction. So in Ramappa temple, they have employed this kind of technology, and guess what? This temple actually got destroyed. It didn't get destroyed, but there was a big earthquake in this Ramappa temple, but the temple survived because of this technology. Okay, and then there is something even more interesting, is that you can find moving parts in temples. In many of the South Indian temples, because they're more intact than North Indian temples, we can see moving parts in South Indian temples. The classic example is that they will have a chain made of stone hanging from the ceiling. We don't know how they made them. It looks really fantastic to see granite chains hanging from the ceiling, but even with just a small breeze, these chains will start moving. Okay, so you can see moving parts like this. You can also find rotating pillars. There is a temple called
Ranganatha Swami Temple in Bangalore. And what they found recently was that they have certain parts in the pillars that are rotatable. This temple became so famous that thousands of people started to come in and they still try to rotate these parts. You also have another famous thematic carving. This is called a yali or vyala in temples. There is like a lion-like animal, and inside the lion's mouth, you will find a stone ball. You can go and you can rotate the ball. You can roll the ball, you can rotate the ball, you can move the ball, but you cannot pull the ball out of the mouth of the lion. Okay, so you can find all these movable parts in these temples. So we are now looking more and more into these ancient temples because I'm starting to theorize that all temples will have at least one moving part. We have recently found more moving parts in temples of Tamil Nadu. Like almost every 2 weeks we are starting to find a temple that has a moving part. We are finding more and more of these machine-like moving parts in temples. Another interesting part about this is many ancient temples have underground tunnels. The classic example of this is again Modara Sun Temple. If you go to Modara Sun Temple, you still have the entrance to the underground tunnel. They've kind of put a fence around this, so you cannot go into it. But they still have that entrance right in the temple complex. And now where does this tunnel go? The Gujarat Tourism Department has openly stated that this is going to Rani Ki Vav, which is another temple in Gujarat. And then there is also another temple called the Jasmal Nathji Temple. This is also in Gujarat. So if you go to this temple, because when we went to Jasmal Nathji Temple, there used to be an entrance in the temple itself, but now they have covered this. And if you talk to the priest, which I show in the video, the priest says that, okay, this tunnel also goes to Rani Ki Vav. Now, if you map this ancient underground tunnel, which was built more than 1,000 years ago, this is stretching more than 100 kilometers. Okay? Now, this is really interesting because if you go to Google and if you say, what is the longest underground tunnel in the world, you will get the answer as the Gotthard Base Tunnel in Switzerland. But it's not that long. I think it's maybe only 65 kilometers. But the ancient underground tunnel we have in Gujarat is actually much, much longer than that. Okay, we have not really Thank you. We have not explored that. We are not starting to map this ancient underground tunnel for various reasons. But understand this, if they could build an underground tunnel that stretches for more than 100 kilometers, understand the technology behind that. You need oxygen underground. This is a major problem in modern underground tunnels. You need lighting. Without the lighting, you cannot operate such tunnels. So we have had some very advanced technology more than 1,000 years ago. And most of this, there is a major group that is in denial about this, that wants to deny that it ever existed. And there is also another group which is starting to kind of question that, which is great. You should question that. There's only a very small group of people who are starting to look at the evidence and say, yes, it is possible that we have had some amazing technology in these ancient temples. Okay? So when you start to look more and more at ancient temples, you will realize that these people were building these amazing structures, not only in India, okay, because today we think of India or Bharat as just India. But once upon a time it was much, much broader. And this is the concept of Akhand Bharat that we're talking about. We have researched many sites in Cambodia. We have researched many sites in Indonesia. We have researched many sites in Sri Lanka.
And what we are finding there is that there are many, many hidden gems. There are many amazing temples all around us, outside India. And we want to encourage people like you, the young minds like you should go and you should explore those ancient temples too. And what is the largest Hindu temple in the world? It is called the Parama Vishnu Loka. Most of you may not know that what is Parama Vishnu Loka, but it's actually, getting another mic? Is it on? Yes, it is on. Check. And again, we were talking about, good, no? Check. Good? Am I good? So we were talking about the largest Hindu temple in the world, right? This that is bigger than the Vatican City. It's not even bigger than like some church or mosque. It's bigger than the Vatican City itself. Okay, you have to measure this temple in acres. We have spent many weeks there, and the walls of this temple stretch in kilometers. Then we're not talking, when we talk about temples, we want to measure them, or houses or buildings, we want to talk about them in feet, right? But we are talking about kilometers, stretching for kilometers. The carvings show everything. The carvings show the entire Ramayana in this temple. And today, this is very interesting, because if you ever get a chance, go to Cambodia, but the main Vishnu statue is gone. It's not there. Okay, because we have not protected our ancient culture. We have let down our ancestors who have built these amazing structures. And this is kind of, I mean, of course, we have rebuilt the Ram temple in Ayodhya, right? This is fantastic. But I think this is only a first step. Because every time we make a video on YouTube, or when we take a group and we show them the temples, we'll usually say, this temple was destroyed, right? But this is the first time in history, I think we are now saying, this temple was destroyed, but we have rebuilt this temple, which is really fantastic. So I hope we can continue with this. Actually, the government of India has done some significant steps to do this. The Indian government today is also working with the Cambodian government. They're trying to restore the Indian temples there. I think they're also starting to work with the Indonesian government, because they want to renovate and restore all ancient Hindu temples, not only limited to India, not only limited to today's India, because the entire Southeast Asia used to be our country. That's a fact. Okay, so you can see how advanced these temples were. We have spent another 2 weeks in Java, in the island of Java, in Indonesia, and wherever you go in Indonesia, we will be driving in the middle of the road somewhere, and then you will find an abandoned Nandi. You will find a bull on the street corner. Of course, its head has been cut off, and it's just standing there. But when you go and you talk to the locals, you realize that Nandi is 1,200 years old.
and it's just sitting there. That's like it's completely abandoned. So we have these remnants all over Southeast Asia. So all of this used to be a part of this great civilization, and I think we should be able to reclaim this. Okay. Now, we document all the carvings. We will take a team and we will go to an ancient temple and we will take pictures and videos of all the carvings. Sometimes it takes weeks. Usually it takes like 4 or 5 days because some temples have thousands of carvings. In some carvings, we find evidence of very advanced technology. In one carving in Hoysaleswara temple in Karnataka, you will see a man holding a telescope to his eye and looking at the sky. And according to the history that we read, the telescope was only invented maybe 500 years ago, right, by Galileo and Lippershey. But this carving, and archaeologists confirm this, the archaeologists confirm that this carving is about 850 years old. So ancient Indians were using devices like this. You have to wonder, how did they have so much knowledge about distant stars? They understood stars. How did they do it without telescope? Is it possible that they were using devices like telescope? And again, more information about medical technology. If you go to the Museum of Allahabad, you will find a 2,000-year-old carving, and that shows the intestines. It shows the small and large intestines in the stomach. So I think in ancient times, people were also studying medicine, engineering, just like us. And unfortunately, because of all these changes that happened to us, we have lost most of the information. So I can give you more and more examples like this. We find evidences of gears in temples, advanced gear technology like concentric gears, planetary gears in temples. We find medical equipment like piniard horn. Today, if a woman gets pregnant, they use an ultrasound to see if the woman is pregnant or how the baby is. But in countries like Africa, they use a device called the piniard horn. They'll have a horn-like device and they'll put it to the ear and put it on the belly of the woman. Now, there is a very similar carving in Rani Ki Vav temple. There is a woman, a pregnant woman, and there is a person putting that device on the belly of that woman. Now, these have never been recorded because we are not looking at the carvings, because we are not actively seeking to find information from these temples. Okay? So, I've come to the end of the speech. Usually, when somebody comes and they give a speech, they may try to sell you something. They may say, I've written this great book, you should buy this. Or I can say, I'm doing a yoga course, buy this, I should be able to sell you something. I don't have anything to sell to you. I'm not trying to sell you a product or a service or something like this. Now, but I do want a favor from you, and that can be done only by young people like you. If a dozen people go out there and if they start to research temples, that'll be fantastic. When you go to a temple, you've all been going to temples, I know this, I think most of you may be going to the temples, but you will be closing your eyes, praying to the God, and then coming back. You should do this. I also do this. I also close my eyes and pray to the God. But also open your eyes and look at the carvings. Open your eyes and look at the architecture. Open your eyes and see what you can find. A simple picture you take with your phone, you all take pictures of the food you eat, I'm sure, right? And put it on Instagram. So take pictures of these carvings and put it on social media. And this will be a great... Thank you. This will be a great service for the future generation. This is what we really need to
need to do. If 100 people go out to these ancient temples and you can find any carving and you take a picture of it and you share it on social media, it'll be a great service to all of us. Okay? So thank you again. Thanks to all of you for listening to me. Thank you, everybody. Oh, sure. Sure. Thank you, sir, for sharing eye-opening facts with us. We've realized and learned about so many things we never knew about Gujarat and India. And as sir emphasized that visit as many temples as much as we can, shall we promise to him that we will start by visiting the Ayodhya Ram Mandir at the outset? Namaskar, sir. Namaskar. My name is Umang. Sir, when I visited Taj Mahal, I observed that there are some multifoil arches, 4-point arches, shoulder arches over there. The similar arches are observed in the temples of Rajasthan. Sir, what do you think about Taj Mahal architecture? Namaste. I already made a video about this, about Taj Mahal. I probably made this in 2017. This is about 8 years ago. We have raised several questions. This is not new that that people think that Taj Mahal is a Hindu temple. There is definitely something there in the premises. We have raised several questions about this. There is an author called P.N. Oak who has written an entire treatise about how the Taj Mahal, is it your mic? How the Taj Mahal was originally a Hindu temple. And then we have showed what is underground, underneath the structure that we see also. We can see several resemblances on top as well. We can, for example, just like what you mentioned, you can also see the trident symbol in some places. You can see many other Hindu symbols in Taj Mahal. But there is also something major hidden. I request everyone to please maintain silence, please. Kindly maintain the decorum of the auditorium. We can also see that many people have found underground passages. There is a book written about Shah Jahan, and this book is called Badshah Nama. This book was written maybe 400, 500, around his time. And even the author mentions that a particular land was procured from a Hindu king. So it is well known that a temple existed there already, even before they started to build. And then there is a bigger question of, is the entire Taj Mahal itself more and more people have questioned about this, but eventually we may find that it's entirely a Hindu monument, like what we're trying to find with Qutub Minar. We made a video about Qutub Minar in which we show that right next to the Qutub Minar monument, if you just turn the camera, you will find all the Hindu deities. You will find Ganesha, you will find carvings of Ramayana. When we made a video about this 8 years ago, people thought that it was a conspiracy theory. People thought, this is not true. But today, now the courts, even the archaeology department has actually accepted that yes, Qutub Minar it used to be a group of ancient temples. So slowly, things are changing, but
I hope that with Taj Mahal also, more truth comes out. Thanks. Give him the mic. Sir. Namaste, sir. Hey. Sir, there are many scriptures. The technology that's explained in these texts are actually quite advanced. They talk about, for example, earthquake proofing technology. In texts like Mayamatam, they give us very advanced information. For example, they tell us how to build a temple. They tell us when, how you find a sacred place for building a temple. The entire Modhera temple was built very precisely using Vastu Shastra techniques, and it helps us to recreate the carvings. For example, if you go to Modhera Sun Temple, you'll find a carving that is completely destroyed. That is completely destroyed. You cannot make out what that carving is. But what we do is we find out that, okay, so this carving is positioned in the northeast. So it must be this god. We find out that this carving is positioned next to this deity, and we are able to recreate that carving. So because we have a strong text, because we have these strong scriptures, that knowledge does not get lost. This is one of the biggest advantages of having texts like this. When we went to the Bayon temple, this is a Bayon, most of you, I don't know if you've heard of this, there is a temple called Bayon Temple in Cambodia. And if you have ever searched for pictures, you'll see these big faces. There'll be big statues with faces on 4 sides. And according to the Cambodian government, according to the tour guides, they will tell you these are Buddhist statues, this show Buddha. But no, when we look at these carvings, we realize that there are 4 faces facing 4 sides, and we recreate these carvings using these Shilpa Shastra techniques, and we say, okay, so this deity is wearing a crown, this deity is wearing ornaments, this deity has a 3rd eye. And then we go back to the ancient Hindu text and we realize that this is Lord Brahma. And we present the evidence to them. Eventually, today, because 90% of Cambodia is Buddhist, now this looks like a strange theory, but 10 years later, they will slowly start to accept that yes, this is a temple dedicated to Lord Brahma. Because that evidence comes from actual scriptures. Because if Praveen Mohan says it, or if somebody says this, they may not accept. But when you point to an ancient text, when you point to a Vastu Shastra text, when you point to Mayamatam, they say, okay, so this is irrefutable evidence. This text existed thousands of years ago, and this carving matches this text. And that's how we change history. Okay? Thanks. Hello, sir. My question is that why is there such a massive structural difference between temples built in southern part of India and northern part of India? Good question. So you have a variety of different architectures. The common narrative when you're an outsider, the common narrative is that there is a Dravida architecture, which is South Indian, and then there is a Nagara architecture, which is North Indian. But there are many, many more types of architectures beyond that.
There are not only Dravida and Nagara, there are many different types of architectures. There is Vesara architecture, for example, which is a combo. There is also Hoysala architecture, for example. There are many types of architectures. See, in Hinduism, and I think this is the beauty of Hinduism, nobody will suppress your creativity. They're not going to say, no, you cannot do this. You can, for example, in Chennai, we have a temple, which is actually now a popular temple. This is called Cricket Ganesha. They have an idol of Ganesha holding a cricket bat. And whenever people go to cricket tournaments, they go to this temple to get the blessings of this Ganesha because they think they will win if they worship this Ganesha. There is a famous temple called Visa Temple in Hyderabad. When people go abroad, they will go to this temple because they believe that if they go and see this deity, they will get the visa. So we don't stifle the people. We don't stifle builders. No, but if you build your own temple in your backyard today, nobody will come and tell you, why are you building it in this architecture? Because you are free to build whatever you want. So there are many different types of architecture, and people experimented with that architecture. For example, they took an entire mountain. They take one large mountain and they made that into a temple. This is the Kailash temple in Ellora caves. It's just made of one stone. They built everything from one stone. Now in Rani Ki Vav, a temple, how does a temple look? A temple starts from the ground, it goes up, right? In Rani Ki Vav, they inverted this. You will start from the ground level and you will go inside. And inside there is an inverted pyramid. So they reversed the architecture. And we give all these ideas. If you come up with a great new idea, Hinduism will welcome that. You can build your own Hindu structure. So we created cave temples, we created relief structures, we created all types of architecture. And yes, there will be big differences between these architectures. Yes, there will be big differences between these architectures, and that's also because of the purpose. For example, in earthquake-prone places, the temples will not be very tall. The temples will be like really wide because they don't want to be destroyed, because they know this is an earthquake-prone zone. So they were just using common sense to build these temples. If you are in a large mountainous area, build temples like Kailash. If you are in a plain, go and get granite somewhere and build pyramid-like structures. If this is an earthquake-like area, build wide structures which won't just fall off. And believe it or not, there is a place called Phnom Kulen in Cambodia. It doesn't have anything. It doesn't have anything. There is water flowing from the mountain. And in that river bed, there are 1,000 lingams. The original name of, today it's called Phnom Kulen. We researched this site. Today it's called Phnom Kulen. But the original name of this was Sahasralinga. And the mountain itself was called Mahendra Parvata. These are all pure Sanskrit terms. And then they could build the lingams underwater, so the water flows through the lingam. And when you ask locals why did they build these lingams underwater, right? When Hindus went from India to Cambodia, it was just a jungle. So they leveled all the trees and they tried to make rice fields. So rice and wheat fields, right? So because we need to start agriculture there. But no matter what they tried, nothing was coming. There was no rice. The rice was not, getting grown there. So they realized they need a touch of Shiva, because the water that's coming from the mountain is not enough. There's something missing in that water, right, to give that yield. So they created 1,000 lingams in the riverbed. So the water flows through the lingam and becomes sacred. And the rice starts growing. Well, today we do this. Now this is where we mix the science and spirituality, right? This is just a belief, right? It may take 50 years for us to prove this as a fact. We don't know this. It may also be wrong, but we don't know this as a fact. But ancient builders were thinking how to make it,
how to create even today in Cambodia, they're growing more and more rice because of this sacred water coming out of this mountain. And all this technology was created by ancient builders, and all this different architecture, underground architecture, underwater architecture. It's all like, once you get into ancient temple architecture, you will realize that your lifetime is not enough. And it's not just limited to Dravida or Nagara architecture, okay? Good morning, sir. Good morning. Sir, here. Hello. Sir, so my question is, who built the Ram Mandir in Ayodhya, and did archaeologists experience in that Ram Mandir temple? It's a good question. So we worked on a temple museum in Ayodhya. We were called by the UP government. They wanted us to build a temple museum, which the work has begun, and I'm on the advisory board. I advise them to see what to put in the museum and all that stuff. So I got a chance to go into the already existing museum of Ayodhya. Okay, so I cannot say for sure who built the Ayodhya Ram Mandir, but I can tell you, if you go to the existing museum today, you will actually see the remnants of an ancient Ram temple there. You will still see the pillars have been taken from the earth, and they have put all these remnants in the museum. At least there must be one or two, I doubt it now, because the big controversy, especially in South India, is not that people destroyed the masjid that existed there. The big narrative in South India is that there was no Ram temple there to begin with. This is still a big narrative in many parts of South India. There is no Ram temple there to begin with. But the archaeologists actually looked into all the remnants, and they said, look, these are all Hindu structures. You can still see parts of the Vimana. You can still see parts of the temples that were all buried there. This was done by an archaeologist called Muhammad, actually, who actually excavated them. And you can still see them in the Ayodhya Museum. A lot of these remnants are still kept in warehouses. And hopefully someday it will be available for the public. But if you go to Ayodhya, if you go to this museum, this is kind of an older museum that's going to be renovated, but you will see the remnants of an ancient temple there. Okay? Hello. Good morning, sir. Sir, here. This side. Where are you? Oh, hi. Hi. Sir, there is one temple in the East India named Kamakhya Devi Temple. I have heard many things about that, like as we females go through menstruation, once a year that goddess also goes through the same process, and it has been believed that the walls of the temple and the river besides it turns red once a year. So is it any science behind this? Well, I haven't researched it. I don't know if I'm even allowed. I thought it was only for females, no? Okay, I think, of course, I haven't researched this firsthand. What we do is we try to get permission to go into temples. When we go into any ancient temple as a team, we'll probably take like half a dozen people and we go into a temple. We'll spend at least a week, maybe like 4 days or sometimes 2 weeks there to study one temple. But getting permission to film everything is a big process, especially in India. This is the main reason we go to places like Indonesia and Cambodia, because they don't view it as a temple. They allow us freely to film everything, to take drone shots and everything. But I think we have applied to Kamakhya temple and we are not allowed to film some parts of the temple. So we have not researched the temple. When we research it, we'll find out. Who's asking? Anybody?
चलिए आगे बढ़ते हुए आज के इस ऐतिहासिक अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर एक रामबाण मंत्र के बारे में जानते हैं, जिसका जाप करने से हमें हमारे जीवन में कई लाभ मिल सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। आइए इसे एक कथा की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने के लिए अनुरोध किया। पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वे अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही है। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने पर जब भगवान शिव ने पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र के पाठ के समाप्त होने के पश्चात ही आ सकेगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था। अतः भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम इस द्विक्षर नाम का जाप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा मंत्र जिसका ध्यान करने से सारे दुख दूर होंगे और परेशानियों का हल होगा। इस मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने के जाप से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं और बिगड़े काम भी बनने की संभावना बनती है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए मैं सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन करती हूं और प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट डॉक्टर नागेश भंडारी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे अध्यक्ष महोदय को शाल और राम मंदिर मेमेंटो से अभिनंदन करें। नीचे I should go down. I can go down. मैं प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट डॉक्टर रितु भंडारी से भी निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और प्रवीण मोहन जी को आचरणम बुक 108 मंत्र ऑफ इंडिक विजडम फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भेंट करें। प्लीज मैडम। Big round of applause, please. आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। I would now request sir to please take his seat. Thank you, sir.
Now I would like to invite Professor Dr. Vedvyas Dwivedi, Executive Vice President, for addressing us. Let us welcome him with a big round of applause. Thank you. ॐ भुवं भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो मृदं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ॐ। धन्यवाद मैडम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अति उत्तम शुभ क्षण पे हमारे मार्गदर्शक गुरुतुल्य कर्म के प्रतिनिधि स्वरूप आदरणीय डॉक्टर नागेश भंडारी जी महोदय एवं मातृशक्ति रूपा हृदय से करुणा स्वरूप डॉक्टर रितु भंडारी मैडम, समस्त यूनिवर्सिटी के अधिकारीगण और समस्त विद्यार्थियों के हृदय में निवास करने वाले उस प्रभु राम को स्मरण करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनकी शरणागति में जाते हुए हम उस मोहन जिसने मोह को समाप्त कर दिया, जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, और उस प्रवीण अर्थात प्रवीण से प्रारंभ करके मोहन तक की यात्रा जिसने किया, 10 वर्षों की अखंड तपस्या करते हुए हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। आप सबकी ओर से मैं उस मोहन से प्रवीण और प्रवीण से मोहन अर्थात नाभि से सहस्रार और सहस्रार से नाभि को जो राम उत्पन्न होता है और जो राम में ही राममय हो जाता है, ऐसे प्रवीण मोहन जिनका जन्मदिन 14 जुलाई को होता है। 14 जुलाई अर्थात टोटल कितना हुआ? 4, ठीक है। और आज क्या है? 22। तो 14 का जो मूलांक है वो 5 है और आज 22 जनवरी अर्थात वो भी 5 है। ये रिजेम्बलेंस जो सेट हुआ आज इंडस विश्वविद्यालय के लिए, इसके लिए हम लोग आपके प्रवीण मोहन जी अत्यंत कृतज्ञ हैं, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपको नमन करते हैं। जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में आपको और हमें भारतीय मंदिरों की संरचना, उसका विज्ञान इत्यादि के बारे में ये हमें बता रहे थे, तो शायद ही उस समय हम ये समझ सकते थे कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उससे पहले हम नहीं जानते थे। मैं नोट कर रहा था कुछ चीजें जो ये बोल रहे थे, मुझे अंदर से उसने झकझोर दिया कि क्या ऐसी भी परंपरा, क्या ऐसी भी विज्ञान की परंपरा भारत में थी, इंडिया में नहीं, मोहन जी के शब्दों में भारत में थी। आपको मैं 1-2 बात केवल करूंगा। श्लोक नंबर 696 श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 73rd श्लोक में मोहन शब्द की व्याख्या की है।
मोहन शब्द की व्याख्या मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण अर्जुन से सब कुछ कह जाते हैं और बाद में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही तत्व है इसके अंदर। आपके अंग्रेजी भाषा में इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है। वो क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। संस्कृत आप नहीं समझेंगे, इसको मैं अंग्रेजी में बताता हूं। माई ऑल डाउट्स हैव गॉन, सारे संदेह समाप्त हो गए। आई हैव कम आउट ऑफ द इल्यूजन। केवल एक इल्यूजन नहीं, अर्जुन बहुत सारे इल्यूजन में थे जिसको हम मोह कहते हैं। इसलिए मैंने कहा मोह का त्याग करने के बाद मोहन बनता है। राम से कृष्ण की यात्रा इन्होंने हमें करवा दी। हजारों हजारों वर्षों का जो ज्ञान मंदिरों में छिपा है उसे हमें अवगत कराया। इंडस विश्वविद्यालय आपका ऋणी रहेगा। वी विल बी इंडेटेड टू यू सर। हम आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच समय निकाल करके हमें ज्ञान देने के लिए यहाँ पधारे। आप व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं। यू आर नॉट ए पर्सन, यू आर ए पर्सनालिटी सर, and we always be obliged to you, and on behalf of Indus University I take this moment to define one more terminology about प्रवीण मोहन। प्रवीण का अर्थ होता है कुशल। हम हमेशा यूज करते, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नाम होगा सर कुशल। कुशल किसको कहते हैं? हम कहते हैं आप कुशल हो जाओ, मतलब एक्सपर्ट बन जाओ। कुश एक घास होती है, नाम सुना है आपने? कुश लव के भाई का भी नाम था कुश, राम के द्वितीय पुत्र का नाम था कुश। कुश एक बहुत ही कटीली घास होती है। हाथ से छुओगे, निकालने जाओगे तो हाथ कट जाएगा, हाथ में चोट लग जाएगी, खून निकलने लगेगा। लेकिन जब गुरु शिष्य को कहता था कि जाओ कुश ले आओ आसन बिछाने के लिए या अग्नि के रूप में उसका उपयोग करने के लिए, तो जब शिष्य जंगल में जा करके वो घास निकाल के लाते थे तो उनके हाथ लुहान हो जाते थे। धीमे धीमे अभ्यास करते करते, इंडस यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र क्या है? प्रैक्टिस। अभ्यास करते 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 जब विद्यार्थी कुश निकालने के बाद हाथ को रक्त रंजित नहीं करता था, हाथ में खून नहीं लगते थे, तब गुरु उस शिष्य को कहते थे तुम कुशल हो। प्रवीण का अर्थ है कुशल। इन्होंने हमारा मार्ग निष्कंटक किया। इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी तपस्या की होगी यह ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। इसके लिए हम इंडस विश्वविद्यालय कहीं भी इस यात्रा में आपके सहयोगी हो सके तो हमें अवश्य सूचित करिएगा। हमेशा हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिएगा। पूरे इंडस विश्वविद्यालय के तरफ से आपको पुनः पुनः नमन, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर प्रकाश पोदर को मंच पे बुलाना चाहूंगी हमें हनुमान चालीसा का पाठ कराने के लिए। सभागार में उपस्थित सम्मानित मंच, विद्वज्जन एवं हमारे प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। ठीक है, शुरू करने से पहले भगवान राम आने ही वाले हैं और उनके निमित्त जो उनके सबसे प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, जो ज्ञान के सागर भी हैं, उनकी स्तुति करेंगे ताकि हम राम के कार्यों को उनसे प्रेरणा लेते हुए कर सकें, जिससे राम राज्य की स्थापना सुचारू रूप से हो सके। मैं सभागार में उपस्थित समस्त बंधुओं से आग्रह करता हूं कि इस हनुमान चालीसा के पाठ के क्रम में आप सभी स्थान से खड़े हो जाएं। यह पाठ हम सभी सामूहिक रूप से करेंगे।
एक ही बार। अच्छा जी जी। दोहा है, दोहा से शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम्हरो यस गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। कादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि प्रभु फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय हनुमान की जय। धन्यवाद। इसमें एक शब्द आया राम रसायन, एक शब्द आया राम रसायन। आदरणीय डॉक्टर नागेश सर से निवेदन करूंगा, मैं 1 मिनट लूंगा। राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन जानते हैं आप सब? रसायन जो है शब्द है हमारी भाषा का, और अभी बहुत सारे उसके सिनोनिम्स आ गए हैं। तो राम नाम का रसायन बनाने से बहुत सारी औषधियाँ बनती, बहुत सारे मेडिसिन्स बनते हैं। तो अगर वो केमिकल, वो फार्मूला आपके पास है तो बहुत सारे आप फार्मेसी में मेडिसिन्स बना सकते हैं। तो सीता जी ने बोला कि राम नाम का रसायन आपके पास है, मतलब जैसे उपयोग में लेना हो, चाहे इस शरीर के हेल्थ के लिए लेना हो, चाहे आत्मिक हेल्थ के लिए लेना हो, तो आप राम के अगर अधीन हो जाते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो राम रसायन तुम्हारे पासा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, तो ऐसे ही प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज आभासी माध्यम से निहारते हैं। तो क्या आप सब राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने के लिए तैयार हैं? May I request to start the screening, please? में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी जब सुनना तो ले लिए, जब हमें आया वो ले लिए।
अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
सूर्य संत निरामया की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे, और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे, और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, कहते हैं कि कलयुग में भगवान का वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला देख रहे हैं, इनके सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं, और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं, और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है, जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की यात्रा के प्रधान गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान दौरान भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, शपथ लिया यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन और बात वाक्
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
करने का मौका मिला है. I request the student volunteers to distribute the flowers to all the participants. I request all of them to kindly rise for Shri Ram Aarti. मैं सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन करती हूं कि श्री राम आरती के लिए आगे आएं. सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स फ्लावर्स हाथ में रख के आरती करेंगे. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्. कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्. पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. श्री राम भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्. भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्. रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. श्री शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्. शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्. आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. श्री राम
Jai Shri Ram. जय जय श्री राम. कृपया करके बैठ जाएं प्लीज. Students who have the flowers in their hand, please make sure you don't spill the flowers. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम. As we formally come towards the end of this session, I stand before you today with gratitude to witness wherein we have witnessed today's historical and memorable event. On behalf of Indus University, I would like to extend a vote of thanks to each one of you for making this session a great success. To begin with, I express my heartfelt gratitude to Shri Praveen Mohanji for taking out time and sharing your in-depth knowledge with us about ancient temples and inspiring us. To the Presidential Secretariat, Dr. Nagesh Bhandari and Dr. Ritu Bhandari. To the Executive President, Professor Dr. Sandeep Chakravarti. To the Executive Vice President, Dr. Vedvyas Dwivedi. To the Registrar, Dr. R.K. Singh. To the Deputy Registrar, Dr. Suketu Jani. To the Dean of Aviation and Director of WIIA, Ms. Radhika Bhandari ma'am. To Advisor to Indus Design School, Dr. Naina Bhandari. To all the Deans, Directors, HODs, faculty members, admin staff and students. Thank you so much for attending this session. I would now request the students to kindly wait till the dignitaries leave the auditorium. Also, there is one small announcement that all the students and faculty members are requested to assemble near the airport main building for watching the firecrackers and Nukkad Natak. Thank you. Kindly wait.